Welcome back to the first session. It's my privilege to welcome Professor Vikas Arora. So, very soon, our scholar Ms. Kirti will introduce Professor Vikas Arora. But since we are from a university which is doing a lot of research and which is prominent for studies in Vedas, in each session I would like to introduce one shloka related to leadership so that we get confidence, we get knowledge that leadership, because if we search on Google, we will find that there is no theory of leadership by Indians. All the theories are of foreigners on leadership. But let me tell you that these leadership theories about leadership, lot have been already said in Vedas. So with each mantra in one session, in each session, I would like to share with you. So this mantra is from Arthved 12.1.1, which says Satyam Brahmat Mragam Diksha Tapo Brahm Yagya Prithvi Dharayanti Sa no Bhutasya Bhavasya Paliru Lokam Prithvi na Trapotu. In this mantra, 7 qualities of a leader given, such as Satyam, Ritam, Ugram, Diksha, Tapah, Brahma, and Yajna. In these 7 things are remaining in an organization, employees, then it will remain stable. If these 7 things are in the employees of an organization from bottom to top, then it will remain stable and it will not collapse. So with these words, I would invite Kirti to introduce our next speaker, Professor Vikas Arora. I wish he is connected with us. Over to Kirti. Thank you so much, sir. Is I'm audible? Is I'm audible, sir? Yes, Kirti. Yes, you are audible. Yes, please continue. Thank you, sir. So welcome back, all of you. I hope you all enjoy our previous session. Now our session second keynote speaker is with us. It's my privilege to introduce him to all of you. Dr. Vikas Arora is an inspiring motivational speaker and corporate trainer of international repute. He has conducted training programs for the corporate sector and faculty of students community all over India. He is a visiting faculty to many top management institutes of the country. His seminars and workshops are well known for their high quality content, backed by his unique and entertaining style of delivery. Dr. Vikas is a management graduate with distinction from Institute of Management and Research from New Delhi. He started his career in international marketing and possesses worldwide exposure by traveled more than 14 countries and is involved in training since 2001. Presently, he is a trainer of international trade and working as a director at Sunshine Group of Institutions, Rajkot in Gujarat. His knowledge, corporate experience, and worldwide exposure strengthen his belief that essential elements for personal growth is self-realization. He is having more than 23 years of experience. He has authored 4 books on business communication, soft skills, motivate yourself, and HRM. Till date, he has trained more than 1.25 lakh professionals or faculties of students. Recently, he bagged his Best Educationist Award. I welcome you, sir, and I request you to please enlighten our knowledge with your expertise. Over to you, sir. Thank you, madam. Thank you very much. PPT is visible? Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you very much once again. Very good morning to one and all. Good morning. Good morning, sir.
Good morning, Firstly, Dr. Vikas. Welcome. Morning, sir. thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you all. Firstly, I appreciate AICTE for organizing FDP under Atal scheme from 14 to 18 September on a very much required topic, that is leadership. I also congratulate Dr. Pankaj Madan, Dean Faculty of Engineering and Technology, GKV Haridwar, and his whole team. एक जबरदस्त टीम जबरदस्त काम कर रही है और वो टीम है डॉक्टर MM तिवारी, डॉक्टर विपुल शर्मा, डॉक्टर मयंक अग्रवाल, डॉक्टर गजेंद्र रावत, डॉक्टर संजीव लांबा, डॉक्टर सुनील पवार, मिस कीर्ति शर्मा, and today's special guest, Professor Dr. R.K. Soni, Director AICTE Atal FDP. He's also a key player for organizing these FDPs all over India, in fact at JKV. Dr. Suyash Bhardwaj, co-convener, I'm in touch with him from several days. He's doing a good job. Under the guidance of respected Professor Dinesh Bhatt, Registrar GKV, and Honorable Vice Chancellor Professor Roop Kishore Shastri ji, जिनकी blessings आज हमें सुबह मिली उनके शब्दों के द्वारा, I really appreciate the whole team and for the great endeavors. कुछ भी काम करने के लिए बहुत energy, बहुत ताकत, बहुत सोच लगती है, and I really congratulate you all. We just had a special session. The topic was really very, very good, stress management, but coincidentally, some technical issues was there. Nothing can be done for that. But it was really good session from Professor Ishwar Bhardwaj ji. बहुत अच्छे तरीके से सर एक्सप्लेन कर रहे थे, but unfortunately because of technical snag बीच में रुकना पड़ा. I hope stress definitely आपका कम हुआ होगा और अब हम तैयारी करते हैं. We'll be ready for the motivating session that is on leadership. तू अपनी बात में अंदाज में रफ्तार पैदा कर, ये जमाना तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा. Leadership is a very, very challenging task. It's a dynamic act. और आज मैं उम्मीद करता हूं ये बहुत ही जबरदस्त बात होगी जबरदस्त लोगों के साथ. So here we go. Ready? Ready? My voice is audible? Yes, sir. We are ready. Ready to go? Yes, sir. Good. Very nice. Very nice. We'll try to make this session interactive also. देखिए, it is well said that if you have technical skills, definitely you're going to rise in your life. If you have managerial skills, that will be again better. And if you have leadership skills, there is no doubt that you are going to rise in multi-folds. You're going to touch sky heights if you have leadership skills. Leadership is breaking all records. एक बार सचिन तेंदुलकर जी से जब पूछा गया आप किसका रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहेंगे वर्ल्ड में, तो उन्होंने बोला कि मैं किसी का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करना चाहूंगा, मैं खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहूंगा. हमारा पिछला रिकॉर्ड कौन सा था और अगला हम कौन सा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, इस पे ध्यान देना है. लीडरशिप इज टारगेटिंग द गोल. Totally focused approach should be there. जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा. Need to have proactive approach.
Leadership is driving ahead of others. When people are thinking of something, leader is doing it. That is the difference. I'll give you a short, beautiful example. When we go to purchase a car, the car dealers are very smart now. They have a proactive approach. They just don't want to make their customers happy. They want to delight, give them delightful experience. और वो एक कदम आगे सोचते हैं. उन्हें पता है ये कार यहां से निकलने के बाद मंदिर में जाएगी और वहां पे पूजा का सामान चाहिए होगा, लेकिन वो एक पूजा की थाली कार के निकलते समय ही दे देते हैं. That is known as proactive approach. किस तरफ जाना है, किस तरफ लेके जाना है, that is very, very important when we talk of leadership. Beautiful definition. Leadership is not instructing people. It is all about inspiring people. आप अपने शब्दों से कैसे दूसरों के अंदर एक उत्साह भर देते हैं, उनके अंदर एक जान आ जाती है, जोश आ जाता है. That is leadership. That is leadership. Now we'll make next few minutes, we'll try to make this session more interactive, and we are going to talk about great leaders of this world, and we are going to understand their one great quality of leadership. So please tell your name before you answer. You all are welcome to participate. Who is there in the picture and what leadership quality this person had? So, Aarti Palgankar, and it is Visweshwaraya, sir. Yes, please tell me. Who is on the... Visweshwaraya, sir. Yes, madam, please tell me. Sardar Vallabhbhai Patel. Please tell me. Radha Krishna. Yes. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Vice Chancellor of Banaras University. Very nice, very nice. Now, what we're talking of leadership, what great leadership quality he had? He was a great teacher. He has given the direction to the education and he became the President of India. Very nice. क्या नाम है आपका? What's your good name? My name is Anand Kumar From Bangalore. Anand ji, you have given a great answer. Big round of applause for Mr. Anand Kumar from Bangalore. Big round of applause. Very good answer. Thank you, sir. I will elaborate a bit more. The name is Professor Sarvapalli Radhakrishnan. He was Vice President and President of India. 5th September is his birthday, which is celebrated as Teachers' Day. His main contribution is in academics, as you said very well. Another contribution is in promoting teachers, teaching fraternity. And he acted as a bridge between India and abroad in terms of teaching and literary activities. So that is something great about this person. देखिए, जो भी व्यक्ति अपनी फील्ड के अंदर एक नाम अचीव करता है, वो अपनी फील्ड का लीडर कहलाता है. And we celebrate 5th September, Teachers' Day, but we should also know that why we celebrate this day and for whom we celebrate this day. And this is one of the great leader because इनका बहुत जबरदस्त contribution है academics के अंदर, और ये हमारे लिए बड़ा इंस्पायरिंग बात है because अगर ये इतना बड़ा नाम कर सकते हैं academics में रहकर, तो हम में से कोई भी कर सकता है. Believe me, इनका several times नोबेल पुरस्कार के लिए इनका नाम भेजा गया. इस लेवल पर ये he was working, he was acting. So very nice answer. We are moving ahead. Next is, who is this person and who would like to participate? Sardar Vallabhbhai Patel, first Deputy Prime Minister of India. Very Iron nice. Man. Iron Man of India. Who is there? Ashwani, sir. Ashwini ji from where? From GKV FAT, sir. Very nice. Ashwini ji, please tell this person's leadership quality.
Sir, as I know, he's a first deputy PM of India, Perfect. and सर इन्हें लोह पुरुष इसलिए बोलते थे कि जो भी डिसीजन लेते थे, बहुत जितने भी डिसीजन इन्होंने लिए हैं लाइफ में, वो सारे के सारे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे लिए हैं, मतलब। ठीक है अश्विनी जी, अब मैं आपको इनकी ऐसी क्वालिटी बताता हूं जिसकी वजह से इनको आयरन मैन कहा जाता है, और वो काम यही कर सकते थे क्योंकि इनके अंदर इतनी जबरदस्त हमने कहा ना कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए लीडर के अंदर, इनके अंदर इतनी जबरदस्त कन्विंसिंग पावर थी। बिलीव मी, 562 रियासत स्मॉल स्टेट्स ऑफ इंडिया को इन्होंने यूनाइट किया था, और जब इनको ये काम किया गया था तो ये कहा गया था कि ये एक ही व्यक्ति हिंदुस्तान में, एक ही व्यक्ति इस काम को कर सकता है, और वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसीलिए इनके नाम के आगे सरदार लिखा और बोला जाता है। दैट इज द ग्रेट क्वालिटी ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट, yes, who would like to participate? Hello, sir. Yes, please tell me. Vivekanand ji. Yeah, he has Perfect. Vivekanand ji. Perfect. आगे बताइए। He's the youth icon. यूथ आइकॉन, परफेक्ट। कौन बोल रहे हैं? I am Basavaraj Madigond from Karnataka. Very nice, very nice. Yeah. Very nice. Move ahead. What is his one great quality? He's a great leader. He's a great motivator, and he practiced what he taught. Very nice, very nice. Perfect answer. But one thing which I would like to highlight for on his personality as his leadership quality is that he was a wandering saint, and definitely, no doubt, there is no doubt, youth icon, one of the best personality. But when he delivered a talk at Chicago in 1893, he got recognition all over the world. ये अमर हो गए उस दिन से। That reflects the power of speech. He had given a great talk in that congregation, spiritual congregation, and after that, the world starts recognizing him. Then we can learn one thing, the leader, that power of speech which God has given to us can make a big difference in anybody's life. This is the difference we have seen in Swami Vivekananda's life. Till now, everyone recognizes that his great speech, which he has delivered in 1893. Next. Sir, dear brothers and sisters. Hello. Yes, please. Dear brothers and sisters, the word he started. Yes, perfectly right. He started with dear brothers, and everybody was stunned. Perfect. Yeah. Next, we move to next. Sir. Yes. Yeah. I just would like to add something. Yes, just now you have shown the man. The year what you have mentioned, 1893, on the same day, in the same year, Mahatma Gandhi ji was thrown out of the railway. Yes. I'm coming to that. You are perfectly right. I'm coming to that. Very nice, very nice. Okay, now tell me, what is the special thing as a leader in this man? Simplicity, sir. Very nice, true. Leading. Who is there? Please tell me. I'm Basavaraj Madigond. Yes, Madhukonji from Karnataka. Yes, sir. Big round of applause for Professor Madhukon for his great participation. Thank you. Good. Thank you, sir. Yes, Mr. Madhukon, please tell me. Yeah, he's a true human being, and cared for everyone. At least he thought of the last man of the society, and he tried to uplift the poorest of the poor and the most humiliated community of our country or the world. Very nice, Madhuvanji. Please try to see that I am focusing on the great leaders with their great qualities. What qualities we can learn from them? Yes, madam, please tell me. He practiced what he taught.
Perfect answer. Perfect answer. Now I'll tell you a few things more. I would like to highlight important things about him. He was a non-violent person. Yes, non-violent approach. He had a non-violent approach. Perfect. He has given a lot of things for the women's right, Yes, as yes. well as building ethics in normal people around him. Very true. And Very true. most important was untouchability. What was the prime thing during those times, and still it is today. But he has made a lot of efforts for the untouchability No to be doubt. eradicated. Yes. Who is there, madam? Who you are from? This is Amina Begum from Deccan Engineering College, Hyderabad. Very nice, madam. Sir, Nice. sir, may I add something to this? Yes, please tell me. He is selfless. I mean, he never worried about his, own being. He never fought for the power. Yes, perfect. Mr. Madhavan? Madigond. Yes, Madhikun. Yes, Mr. Madhikun. Yes, perfect answer. Now, see, you have given so many. You have told so many qualities, but maybe I'm going to highlight. I think that maybe you will also feel that may be the biggest quality. Now, his name is Mohan Karamchand Gandhi. Yes. Okay. He had, I feel, sir, may I add something? Yes, please tell me, madam. This is Riya Rupani from Mumbai. He Yes, had madam. courage. He had courage and gumption to be at the forefront and take the lead. To take the lead. Perfect. You know, he never thought that. And then. Perfect. Now I'll tell you a few more things about this. His name is Mohandas Karamchand Gandhi. We all know that. In the age of 24, he was thrown. That incident took place when he was thrown out of the train. On that day, he determined that अंग्रेजों तुमने मुझे आज ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकाला है, एक दिन आएगा मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकाल लूंगा. After 6 and 15, 21 years, in 1915, he came to India along with his wife. 32 years, this person struggled for the freedom of India. 32 years struggle. आजकल 1-2 साल की बात नहीं है, 32 साल इन्होंने स्ट्रगल किया, एंड दैट्स व्हाई इनके नाम के आगे लगता है महात्मा गांधी. और सबसे भी बड़ी बात, the big thing which I am going to tell now, that he is the man who has shown the vision to the people of India that see, देखिए आप, ये हमारा देश इन अंग्रेजों से आजाद हो सकता है. ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को एक विजन दिया, एक दूरदर्शिता दी. Besides so many good qualities which you already have told, इन्होंने वो दूरदर्शिता दी जिसकी वजह से लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ. उन्हें भी लगा हाँ ये सही कह रहे हैं, हमारा देश आजाद हो सकता है. और दैट वाज द मेन रीजन. जब हम लोगों को अपने ऊपर विश्वास हो गया कि हम लोग आजाद हो सकते हैं, उसके बाद वो जंग शुरू हुई और उसके बाद हमें आजादी मिली. दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्सन. नेक्स्ट, मदर तेरेसा. वेरी गुड. व्हाट डू यू नो अबाउट हर? Selfless service to the human being. Selfless service to the human being. Who is there? Yeah, Dr. Madigond, Basavaraj Madigond from Karnataka, Hirashigor Institute of Technology. Okay. Madhikon ji, I feel the best participation award you are only going to get today. Thank you, sir. All others should also participate. He got unconditional love, sir. Unconditional love. कौन बोल रहे हैं? It's Aarti from SGS Nanded. Okay, Madam Aarti. Very nice, Madam Aarti. Good participation. Unconditional love. और क्या बात इनके बारे में आप जानते हैं? I'll tell you a very special thing about all these people. That's why I've kept them here. So they send out. I will. I'm not clear. Please tell me again. Sir, Neeraj Kumar Puri is sent from Punjab, Pathankot. I would also love to contribute something if given some time. Neeraj ji, most welcome. Please tell. But be specific. With regard to Mahatma Gandhi ji or with regard to Mother Teresa? No, please, we have now come ahead. We will talk about Mother Teresa. So if we talk about her
lifestyle, or if you talk about her contribution, it was like sacrifice and the top stage of any leader. Very true, very true, very true. What's your good name? What's your good name? Neeraj. Mr. Neeraj speaking. To contribute and want to pay back to society, and where you are, above all, top of all is your empathy. Very nice. क्या नाम बताया आपने अपना? Demonstrated. Yes, please tell me your name. From Pathankot. Neeraj Mohan. See, the thing which I wanted to highlight, Neeraj has fought that thing and he has already spoken. Her empathetic approach that brought her on the position of Mother Teresa. I think we should give big round of applause for Neeraj Mohan Puri ji. Big round of applause. Very nice answer. Very nice. Now, I'll tell you one thing, Neeraj ji. Her actual name is Enze Gongse Bozahio from Yugoslavia. She left her body at the age of 87 years. In 16 years, she became nun. Just imagine, for 71 years, she was on the job. She was helping poor. She was helping poor, and she was able to do this big thing because of her empathetic approach, which you just said. She was very, very empathetic. Means these were the people who are great people. Who are the great people, not only in India but in the world. I'm not clear. I will add two more dimensions: humility and humbleness. Also, were part and parcel of her character, her personality. Definitely, many other qualities are there, but definitely we'll focus on that particular quality which make them great. Okay, now we shift to next leader. Okay. So, Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, he may have great qualities, but one very specific quality, if you can highlight. Great orator. Very nice. Orator. He is a global leader with global vision, where we can act globally. Think globally. Very true. Influential person. Futuristic vision. Futuristic vision, influential person. Very nice. Perfect. Yeah, strategic thinking. Strategic thinking. Who said this? This is Rahul Mehta from Mumbai. Rahul ji, very nice answer. Strategic thinking. Very nice. Very nice. What else? He has come up with more schemes. Pardon? He has come with more schemes. Yes, more schemes, and definitely good leader. Dr. Ubi Senegal is a brave leader. Definitely, he is brave. So now I'll tell you one. So simplicity could also be added to his personality. Yes, simplicity, you can say. Sir, I feel he's mentally very strong. He doesn't get baffled with the situation and the people around talking. He is very focused person. Yes, mentally focused and mentally strong. Perfect. Very true. Now I'm going to tell one great thing that we all will recognize, that he is very, very hardworking. He is very, very hardworking. If I am allowed to speak. Please, just see, he is very, very hardworking. He works 15 to 18 hours a day without taking any leave, and at the age of 69 years. If we can think, if we are not at the age of 69 years, that how come a person at the age of 69 years can work 15 to 18 hours without taking any leave? That is something really great. So leader
is not supposed to speak only or say something, but he has to prove, he has to work very hard at the same time. That is the beauty of this leader. और इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, दुनिया का हर I would like to speak something about Mr. Modi. Yes, please tell me who is there. This is Dr. Anand from Bangalore. Yes, Dr. Anand, please tell me. Yeah, see, Mr. Modi, he's a person who's coming from the very grassroots level. Perfect. And he's a practical person. Perfect. He is looking at the opportunity at the basic level where the poor and the bottom level of the society could be benefited. Perfect. Very nice. Very nice. Dr. Anand Kumar. Yes. If you look at the policies of Mr. Modi, he's always looking at the practicality. Yes, practicality. No, okay. Now, इनके लिए मैं अभी इनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से होती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता. That is the beauty of hard work. So next, our next leader is, yes, please tell me who can tell about this person. Anybody can participate? Sir. Yes. One more trait about our. No, please. So now we don't have that much time. अब इनके बारे में आप बताइए. जो next. I think Satish Dhawan, sir. Sir, Homi Baba. किसने Satish बोला Dhawan. ये सतीश धवन जी किसने बोला? Satish from Andhra Pradesh. ओके, वेरी नाइस. आपने बहुत सही बोला. और इनकी कोई खास लीडरशिप क्वालिटीज आप बताना चाहेंगे? Quality is a great knowledge person. Very nice. And he does the things by inspiring only, not instructing. ओके, वेरी नाइस. मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा. ही इज अ पर्सन, वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो. एक बार क्या हुआ, this thing was narrated by our honorable past president APJ Abdul Kalam ji. He was a chairman of ISRO at that time, and APJ Abdul Kalam ji was a director with a team of experts. They are supposed to launch a satellite at that time. There was some error showing in the computer, but they moved ahead by their manual calculation, and they thought that error is very minor. It will hardly make any difference. Now, when the satellite was launched, it totally crashed within a few seconds only, and there was a very big press conference waiting outside. Professor Satish Dhawan took APJ Abdul Kalam with him and said, "Come on, we go for this press conference." This conference, they went to press conference. Please unmute yourself. Sorry, please mute yourself. Some disturbance is coming. Please mute yourself. Some disturbance is coming. ಅದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Mr. Aman, Dr. Anchula Satish, please mute yourself as a lot of disturbance is coming. I was telling Professor Satish Dhawan. Professor Satish Dhawan took Dr. APJ Abdul Kalam ji along with him and said, "Come on, we'll take this press conference." When they went to press conference, Professor Satish Dhawan took the charge and he said, "See, gentlemen, it was mistake at our end. We have identified the mistake, and definitely we'll look into that matter. And in next coming year, we're going to be successful, I suppose, because we have identified the problem." And I really appreciate about my team. They worked very hard, but unfortunately, we are not successful this time. And the press conference was over. Next year, when the satellite was again launched, and it was a big success, Professor Satish Dhawan told Dr. APJ Abdul Kalam ji, "Come on, Dr. APJ Abdul Kalam, go and take the press conference." When there was a problem, he came ahead as a leader. He gave, and when it was successful, he gave credit to his fellow men, teammates. That is the beauty of leadership. That is the best quality which we can learn from
this personality. Now, what we can learn from Dr. APJ Abdul Kalam? You can participate now. Man of India. Pardon? Missile Man of India. Yes, Missile Man of India, there's no doubt. He is the source of inspiration. Source of inspiration, perfectly said. Very true. He is a motivator for irrespective of any kind of the age, from the child to old age. He is very much Yes, motivating. yes, he is inspiring personality for everyone. And he is popularly known as common man's president. Yes, yes, he has touched the heart of many people. Very true. He is having the vision. He has provided Vision 2020. Yes, Vision 2020, perfectly said by Dr. Hemen Jain ji. Great teacher, very nice, very true. So one thing more, he is the Educational living leadership. example. Yes, educational leadership, he has definitely shown us And educational also leadership. research. And development, he was a man from research. Very nice. Now, I'll tell you one important thing, one incident which took place and which reflects his leadership qualities. And these, what I'm trying to highlight as the different and the very important aspects of leadership. Now, what happened? Once upon a time, his employee came to him and asked holiday, sir, I need to go at 4 p.m. today. He said, what happened? Employee said, sir, today I'm having a birthday of my son. That's why I want to go early. He said, okay, no issues. You take leave and you can go. So around 5 p.m., he was just going to the cabin of that employee. He saw that that employee is working late, although he has taken leave. So he didn't say anything to him, and he went to his home, which was in the periphery of that compound only. He went to his home, he stayed with the birthday boy for 1 hour, and he enjoyed the party gathering, and he left. Immediately that person realized that, oh, today I have to go early at 4 p.m. and I didn't remember. He immediately came home at around 6:30, and when he came back at home, everybody at home were very happy, and they told, sir came and sir spent time with us. So the important message here is, see, as a leader, we will do many things for people. We will tell them, but the thing which is going to matter is in life or as a leader is how we make them feel. That is going to remember for a long time. How we make our people feel. That is the very good example from Dr. APJ Abdul Kalam. Yes. Another leadership. Narayan Murthy. Yes, perfectly said. Yes, sir. Narayan Murthy ji, we can learn from him. He has given a roadmap of how to build a company. Yes, perfectly. From scratch. He started his company with the money of 10,000 rupees, which also given by her his wife. And they 7 people started together, and his name was also kept accordingly, Infosys. और जो इनसे हम खास बात सीख सकते हैं, that is sense of ownership. See, when a team works under a leader, उस team के अंदर they should have a sense of ownership that yes, we are also a vital part of this group, organization, company, and we also recognized person over here. हम भी कुछ है, हमारी भी एक ये family है, हमारा भी कोई इससे संबंध है. Why I'm saying this? Because he was the man who distributed 40,000 crore of equity of his shares to his employees, in fact, to his driver also. That was one of the biggest example of his leadership. इन्होंने एक sense of belongingness, sense of ownership जो दी अपने employees को, वो अपने आप में एक leader की तरफ से बहुत बड़ा gesture है और बहुत बड़ी बात है. That is the reason why these people are world recognized and world renowned. So should I? Yes, be fast, please.
Hello. His leadership style was that of a participative, democratic kind of a setup, where he tries to gel up very. He was a grassrooter, not a parachuter. Yes, very, very true, very true, very true. That is the difference when a person is grassrooter. Can I add something, sir? Yes, Neeraj Mohan ji said very well. Yes, madam, please tell me. Yes. He's an example of how to start and means the best entrepreneur and how to start from a scratch. Very And nice. another aspect which I like about him is how to share the means how to treat your better half equally. Yes. Sudha Murthy ma'am को उन्होंने equal जो rights दिए and she was equally involved in it. That is the best मुझे लगता है वो role बात model. सबसे अच्छी लगी. That is what I liked about him. How to start from Yes. the scratch. With 10,000 he started and So equally Sudha Murthy ma'am is involved in everything. Yes, yes. इससे हम Moreover, Infosys was rated as the most you can say lovable and employee friendly for consecutive 7 years in various roles. 21 years CEO Study रहे, with Infosys survey. CEO रहे, 21 years, perfectly said. Very nice, Neeraj ji. And much of the credit is given to Sudha Murthy ma'am. Most preferred institute. Sudha Murthy ma'am, don't worry. Very nice, very I'll nice. add what you just spoke at ownership. Just to have the ownership and to create a sense of belongingness, Infosys was the first company to take an initiative of having that ESOP, employee stock option scheme. Actually, that is itself what you said, that ownership quality. Yes, We ma'am, wanted you to perfectly. include everyone as Very, an very owner. nice, very nice, very nice. Actually, this topic is very interesting, very interactive, but we have to have limit of time. That's why I have to make a moment. Your answers and your participation is really appreciable. Yes, please tell me about this leader now. Nelson Mandela. I request to participate because this is your program. You are the Nelson leader. This is Mandela. our program. So is it Mandela. Nelson Mandela? Nelson Mandela. Nelson Mandela. He ignited the spark. Great steward. He ignited the, you can say, the people for freedom. Indefatigably he worked. Very true, very true. He is very, Okay, Neeraj ji, I will tell you the very big thing about this man is Hello. that he Sir, one more thing to add. Sir, he spent 27 years in. Yes, perfect, Mr. Davis. Perfectly said. You, Mr. Davis, from which place? Mr. Davis, from which place? Hello, my voice is audible. Yes, sir, you're audible. Okay, I move ahead. Mr. Nelson Mandela was in jail for 27 years. He fought for white and black, and he became the icon of all over the world. Believe me, 27 years of jail. जो 14 साल की that life imprisonment is also 14 years. He was in jail for 27 years. Government had a lot of pressure. He was asked that we will bring you out. Please compromise with us. He said no. That is, I will not accept that condition. और 27 साल ने अपने आप को जेल में रखा या रहे, ये पूरी जिंदगी आप समझ लीजिए. And that is the reason why he is a great leader, well known all He over can be all over the world. as an epitome of perseverance. Yes, बहुत ही पेशेंस थी इनके अंदर और 1994-99 में प्रेसिडेंट भी बने साउथ अफ्रीका के. इनकी जो खास लीडरशिप क्वालिटी, जो बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है, जो सस्टेनेबल लीडरशिप क्वालिटी है और जो वो लीडरशिप क्वालिटी जो कभी क्रैश नहीं हो सकती, वो लीडरशिप इनकी क्वालिटी है और वो है दैट इज एथिक्स, एथिकल लीडरशिप. दैट इज एथिकल लीडरशिप. A Long Walk to Freedom. Sir, a Long Walk to Freedom is the autobiography of Nelson Mandela. If you go through that book, we can get A to Z of Nelson Mandela. Very nice, very nice. You are Mr. B. Subbarao. You are from which place? Andhra Pradesh, Vijayawada. Very nice, Mr. Subbarao. Very nice. And UN has declared UN Nelson Mandela Day on 18 July 2010, just to recognize him. Move ahead. Yes. What leadership lessons we can learn from 2611?
Anybody can tell? Stay prepared for the worst. Yes, very good. Very good. Very good. And also be calm under panic conditions. Be calm. Very good. Very nice. Readiness to take on any situation. We should be ready for any. Our readiness to take on any situation, any adverse situation. Any situation. Very, very true. Very true. Anything else? If you add to it, in the terrorist attack 26/11, most of the customers which were there in the hotel were taken care by the staff of that particular hotel. स्टाफ ने मदद की, इसलिए बहुत सारे लोगों की जान बची थी सर. So that is one of the things. आप कहाँ से हैं? आरती जी आप कहाँ से हैं? I am from SGS Nanded, sir. Nanded, okay. So teamwork depicts that the employees of the hotel. Teamwork. She is very near to it. Teamwork. Or now I'll explain further. Big round of applause for Madam Aarti. Thank you, sir. It was the training and commitment. The culture, the ethics, the values which were instilled in employees. Neeraj ji is very, very perfect, very near to it. Big round of applause for Neeraj ji and Aarti madam. Big round of applause. Very good. They have truly said. Now I'll explain the things. यहाँ देखने में ऐसे आया. They had a lot of case study and research also on this incident. After that, see, lot of people, lot of employees of Taj Hotel Mumbai could have run from in that situation, but they came back. Few didn't run. Reception people stayed there because guests were not knowing where to go, how to go out. Employee only knows in and outs of big 5-star hotels. They made a human. Sir, sorry to interrupt. This is a case study being taught in Western countries. Yes, very true. Very true. I've taken many things from there also. So, Neeraj ji, I was telling that इतना ज्यादा लोग अपनी जिंदगी पर खेल के लोगों ने कितने लोग मारे गए. इनके जीएम के बेटा और 2 बच्चे और वाइफ ऊपर रहते थे, वो स्मोक के कारण मारे गए. एंड ही जस्ट फॉट फॉर हिज गेस्ट. कितना ज्यादा इनके अंदर जज्बा भरा होगा. अपनी जिंदगी की परवाह नहीं. दे डिडंट बॉदर फॉर देयर ओन लाइफ एंड दे फॉट लाइक एनीथिंग. 167 casualties, 9 attackers were died, 300 people wounded, but several lives were saved besides this. आप इमेजिन कीजिए अगर ये लोग भाग जाते तो इमेजिन कीजिए कितनी कैजुअलिटीज वुड हैव गॉन इन थाउजेंड्स. पर ऐसा हुआ कैसे? ऐसी कैसी लीडरशिप थी इनके ऊपर? दैट वाज द थिंग टू बी लर्न, टू बी अंडरस्टूड, टू डू केस स्टडी ऑन दैट. How come this possible? When Ratan Tata went to the one employee's home, उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, वाइफ और बच्चों से मिले तो he was bit conscious. तो मुझे पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा. और उनकी वाइफ बोलती है कि सर मुझे आज पता लगा कि इनके पापा, इन बच्चों के पापा तो रियल हीरो थे. That was the answer that lady gave. और इतने लोगों ने, मतलब बाद में ये स्टडी में सामने आया जो अभी मिस्टर नीरज ने कहा कि इनके अंदर एथिक्स, इनके अंदर वैल्यूज, इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेस्ट, अतिथि देवो भव, वो ऐसा कूट के भरा हुआ था कि गेस्ट इज एवरीथिंग, गेस्ट इज गॉड. आप कैसे छोड़ के जा सकते हो इस सिचुएशन के अंदर? और इतनी जबरदस्त चीज ये हमें सामने आई. देखिए इंसिडेंट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो चीज सामने आई इट वाज रियली, मतलब रोंगटे खड़े करने वाली बात थी कि कैसे कैसी लीडरशिप. क्या ऐसी भी कोई लीडरशिप होती जिसमें आपके फॉलोअर्स वो जान देने को तैयार हो जाए आपके लिए? सो दैट मे नॉट बी देयर, बट इतना जज्बा आपके लोगों में हो कि वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए. दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट लीडरशिप. तो वो भी एक लीडरशिप होती है, उसके बारे में भी हमें ध्यान होना चाहिए. सो मूव अहेड, सीइंग सम shortfall of time. So now I'll show you another dimension of leadership. That is the biggest leader, the true leader, and the most ethical leader is Lord Krishna. I'll give you a few examples also to prove my thing. And for that, first I take Lord Krishna. I've delivered a lot of lectures on Lord Krishna, the true leader, but I'll take just summary for this session. My first point is lead by example. देखिए लॉर्ड कृष्णा सिर्फ उन्होंने बातें नहीं करी, उन्होंने कही ये बात. भागवत गीता में भी ये बात करी, बिकॉज आई ऑल्सो डिलीवर लॉट ऑफ टॉक्स ऑन महाभारत एंड भागवत गीता. उन्होंने कहा कि मैं खुद इस धरती पे आया हूं कर्म करने के लिए.
फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा सारथी बना हूं अपना रोल निभाने के लिए, अपना कर्म करने के लिए। तो सिर्फ बातें से काम नहीं चलेगा, खुद परफॉर्म करना पड़ेगा, खुद आगे आना पड़ेगा। वी हैव टू बी एट every time, any time, if we are true leader. Next is flexible approach. 17 times Jarasandh attacked Mathura. 17 times. There was lot of damage being happened. Lord Krishna could have killed him, but that was not the right time. He was very flexible in his approach. He knew which thing, what time is to be done. He preferred to move to Dwarika. उनको उनके ऊपर एक ब्लेम भी लगा, उनका एक नाम रखा गया कि इन्होंने, उनका नाम रखा गया रणछोड़ दास, कि इन्होंने रन मतलब फील्ड, बैटल फील्ड को छोड़ के भाग गए ये द्वारिका, बिकॉज उससे जो नॉर्मल पीपल को डैमेज हो रहा था, उनकी जो डेथ्स हो रही थी वो बहुत ज्यादा थी, और वो ये नहीं चाहते थे उस समय पर कि ये सब हो। और उस समय इन्होंने वहां से जाना ठीक समझा। ये भी एक बड़ी जबरदस्त क्वालिटी एक लीडर की, कब क्या कौन सा काम उसको करना है ये उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज गुड लिसनर। अगर आप भागवत गीता में देखें तो पहले चैप्टर में पूरी द होल टॉक इज अबाउट अर्जुन। व्हाट अर्जुन इज सेइंग, लॉर्ड कृष्णा इज लिसनिंग। एज अ लीडर वी नीड टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। ही वॉज लिसनिंग एंड लिसनिंग, आफ्टर दैट ही स्टार्टेड स्पीकिंग। तो पहले उन्होंने अर्जुन को पूरा मौका दिया कि टेल मी व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड, एंड देन it's my time, I'll tell you what to be done. Next is patience. एक लीडर में कैसे कितनी पेशेंस होनी चाहिए। शिशुपाल, his cousin brother, he gave 100 chances to him. इन्होंने बोला कि शिशुपाल तुम ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, और फिर लास्ट में उन्होंने ये बोला कि जब तुम 100 बार ये गलती दोहराओगे तो समझ लेना उस दिन कुछ होगा। And he killed Shishupal after when he did 100 mistakes. हम क्या करते हैं, कई बारी एक दो बारी में ही या पहली बारी में ही इतना गुस्सा आ जाता है कि वी लूज अवर पेशेंस। नेक्स्ट इज एज ए परफॉर्मर, लॉर्ड कृष्णा वाज अ ग्रेट परफॉर्मर। इन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इन्होंने बार बार अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम भीष्म पितामह को से युद्ध करो, उनको मारो। अर्जुन हर बार विचलित हो रहा था और उन्हें पता था कि जब तक भीष्म पितामह जी युद्ध में है ये युद्ध एक तरफा है। और जब अर्जुन को उनको लगा कि अर्जुन नहीं कर पाएगा, उन्होंने खुद हथियार उठा लिए और भीष्म पितामह की तरफ वो बढ़े। मतलब वो युद्ध करना भी जानते थे और कैसा किससे कब युद्ध करना है वो ये भी जानते थे। ही वॉज इन himself a great performer. That is the great qualities of a good leader. Now we'll come to be more specific. हम और अभी तक हमने लीडर्स, ग्रेट लीडर्स में क्या क्वालिटीज थी, लीडरशिप क्या है, लॉर्ड कृष्णा की लीडरशिप क्या थी। अब हम बात करेंगे एकेडमिक लीडरशिप की, बिकॉज वी आर मोर और लेस एसोसिएटेड विद एकेडमिक्स and administration. Now we will try to understand the in and outs of academics and administration, which I had tried to design with my experience of 24 years in this field. Now, academic leadership is far more than the academics and administration. अगर हम academics में बहुत अच्छे हैं या administration में बहुत अच्छे हैं, it is not going to make us a great leader, especially academic leader. There are many more things which we need to try to understand. So we are running short of time. I'll be a bit fast. Kindly cope up with me. Academic leadership, try to understand authority and responsibility goes hand in hand. Leadership or directorship or deanship or vice chancellorship doesn't mean authority. कुछ भी होता है. The responsibility has to be taken by the leader. Goal clarity is very, very important. Now, गोल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए, हमें कहां पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना है ये हमें पता होना चाहिए। लक्ष्य नहीं जिनका वो ऐसे खो जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। Yes sir, yes sir. Yes sir, clearly audible. Good. Now the next point is empowerment. जब हम किसी को कोई काम देते हैं,
वी नीड टू एम्पावर दैट पर्सन, क्योंकि अगर एम्पावरमेंट नहीं होगी तो वो व्यक्ति डरता रहेगा काम करने से, उसको लगेगा कहीं मैं गलत ना कर दूं, कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए। उसको बोलो गो अहेड, जाओ, डू दिस जॉब, डोंट वरी, गलत हो जाएगा तो आई एम देयर, तो गो एंड डू इट। We need to empower that person when we give job to any job or any assignment to our subordinates or juniors or our faculty members. Empowerment is very, very important. Whenever we are giving any job to anybody, he or she should not feel scared कि मैं काम करूं या ना करूं, गलत होगा तो क्या होगा, डर नहीं होना चाहिए, वो काम नहीं कर पाएंगे। That's why empowerment is very, very important. Next point is knowledge sharing. See, knowledge is power. We are in the field of knowledge. कुछ भी नया सीखने को मिलता है। मेक योर डे बाय लर्निंग समथिंग न्यू। किसी ने कुछ सीखा, उसको बोलो मुझे बताइए, हमने कुछ सीखा, लेट अस शेयर। इन माय कैंपस आई ट्राई टू डू दिस थिंग, व्हाटएवर, व्हेनेवर एनीबॉडी अटेंड्स एनी एफडीपी और एनी वेबिनार और एनी प्रोग्राम और लर्न एनी न्यू थिंग और न्यू ट्रेनिंग, attend any new training, we request them, ask them to share that new knowledge with all other faculty members, because let everybody gain out of it. We are into the field of knowledge sharing only. That is again very, very important. Now, किसी वृक्ष को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए, मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। अब्राहम लिंकन। दिस इज नोन एज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। कोई भी इवेंट है, कोई भी एग्जाम्स है, कोई भी प्लानिंग है, 1 साल की है, 5 साल की है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उससे पहले उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब होता है स्पेसिफिक प्लानिंग, मिनट टू मिनट प्लानिंग, पॉइंट टू पॉइंट प्लानिंग इज वेरी, वेरी, डोंट जस्ट जंप इनटू द जॉब, ये करो, ये कर दो। नो, गिव सम टाइम, थिंक हाउ दिस जॉब कैन बी डन, by whom it can be done, how much time it will take, and ask some proactive question also. When we go ahead with this job, what type of problems we can face. Next is comparison kills creativity. देखिए, it has been observed that in offices, in corporates, in fact in our field, education sector also, when we take meetings, many times people say, देखिए आप उनकी तरह काम क्यों नहीं करते, देखिए आप उसकी तरह काम क्यों नहीं करते, देखो उन्होंने इतना अच्छा काम किया, आपने इसको नहीं किया। That is totally wrong. That is discouraging. A leader cannot say like this. Leader is a motivator, is not a discourage. It's a person who is always discourages. Everyone, we cannot compare orange with apple. Everyone is unique in this world and has core competencies. हर व्यक्ति के अंदर खास चीजें हैं, बहुत खास चीजें हैं। हमें उन चीजों को समझना है, उन चीजों को बढ़ाना है। अगर कोई चीज सही नहीं है तो उसको अकेले में समझाना है, और कोई चीज बहुत अच्छी हुई तो उसको सबके सामने बताना है। क्रिएटिविटी को किल मत करिए। कंपैरिजन करने का मतलब चीजों को खत्म करना है, चीजों को बढ़ाना नहीं है। लीडर का काम चीजों को बढ़ाने का होता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक रिसर्च हुई पीछे जिसमें यह देखा गया कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50% एम्प्लॉइज आर अंडर सैचुरेटेड, और ये बात फैक्ट है। कुछ लोग ही ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं और वो ओवर काम कर रहे होते हैं, ओवरबर्डन्ड होते हैं। जस्ट इमेजिन, ये एक पॉइंट भी अगर हम कंसीडर कर लें तो हमारी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी लेवल और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ मल्टीपल में जा सकती है। एंड डेलीगेशन इज अ टूल ऑफ employee engagement. Delegation means giving specific task to specific person, identifying specific person for giving specific task. That is delegation. It's one of the tool of employee engagement. Employees को engage करना बहुत जरूरी है। See, how many faculties we have, we identify secondary duties, primary duties, we chart it down कि किसको क्या काम है, कौन क्या काम कर सकता है। This way we do, and we monitor that chart also कि how the things are moving ahead, and we see that everybody is given more or less equal jobs, not hard and fast, but सबके पास काम है कि नहीं है। एक व्यक्ति के पास काम नहीं, एक पे ज्यादा काम है। Organization is just like a boat which is tilted. Next, अगेन एकेडमिक लीडरशिप के बाद आगे बात करें तो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। क्यों डेमोक्रेटिक होना चाहिए? बिकॉज in democratic environment there is no fear factor. हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है। अगर व्यक्तियों में, अगर हमारी टीम में लोगों को डर लगता है बात करने में
तो समझ लीजिए दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। जहां फियर फैक्टर दूर होगा तब लोग खुल के काम करेंगे। हंसो, खुल के काम करो, खुल के, दैट इज द बेस्ट थिंग। कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। यस, खासकर देखिए इस कोविड सिचुएशन में थिंग्स आर चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। आप स्मार्ट हैं, आप स्मार्ट लीडर हैं, तो आप अपने आप को बदलिए, पूरी टीम की सोच को बदलिए, अपने आप को अपडेट करिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। बड़ा जज्बा चाहिए फीडबैक लेने के लिए, क्योंकि अपनी बुराई सुनने की ताकत भी होनी चाहिए। अपने आप को इवैल्यूएट करते जाइए टाइम टू टाइम कि आपकी डायरेक्शन, आप जिस दिशा में कंपनी को ले जाना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ले जाना चाह रहे हैं, अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज को ले जाना चाह रहे हैं, क्या वो दिशा सही है? एंड मेक श्योर दैट स्टेक होल्डर्स आर सेटिस्फाइड। स्टेक होल्डर्स आर सेटिस्फाइड। सभी लोग आपसे खुश हैं कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कर रहे हैं, हम बेस्ट कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज पैशन, जुनून। कहते हैं नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट एंथुजियाज्म। चट्टानों को चटका दे रवानी उसको कहते हैं, जो दिल पे नक्श हो जाए कहानी उसको कहते हैं। नहीं मालूम तुमको करिश्मा किसको कहते हैं, हिला दे जो हिमालय को रवानी जोश उसको कहते हैं। दैट इज पैशन। लीडर के अंदर जुनून होना, जज्बा, जुनून, कुछ कर दिखाने की इच्छा होना बहुत जरूरी है। अगेन देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। एक पर्सन एफिशिएंट है बट वेदर ही इज इफेक्टिव टू गेट द जॉब डन और नॉट। फ्लेक्सिबल अप्रोच, भागवत गीता में भी एक अप्रोच देखी गई है कि जो माइंडसेट को चेंज करने की अप्रोच थी, दैट इज वाज ऑल अबाउट भागवत गीता। फ्लेक्सिबल अप्रोच होना मैनेजमेंट और लीडरशिप के अंदर बहुत जरूरी है, और हम समाज का एक पार्ट है, हमने समाज को क्या दे रहे हैं ये भी हमें आइडिया होना बहुत जरूरी है। और यहां पर मैं एटीट्यूड के बारे में, थिंक बिग के बारे में बात करूंगा कि अगर हम अपने लोगों की, अपनी और अपने स्टूडेंट्स की सोच बड़ी कर पाए तो समझ लेना आपने सबसे बड़ी कामयाबी पा ली। और इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, एक बार एक करेंसी के नोट से किसी ने बोला, एक करेंसी के नोट तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, रहोगे तो तुम कागज के टुकड़े ही ना। करेंसी का नोट का जवाब सोच देखिए, जबरदस्त जवाब था। उसने बोला कि मैं जरूर दूंगा कागज का टुकड़ा, सही कहा है, लेकिन इस कागज के टुकड़े को कभी किसी ने डस्टबिन में नहीं फेंका है। See the beautiful answer which that currency note gave. जो नहीं है उसका गम नहीं, जो है वो भी किसी से कम नहीं। That is attitude. And now again, academic leadership, team building is very very important. संगठन एक शक्ति है। अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, बियॉन्ड इमेजिनेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स चाहते हैं, तो बिलीव इन टीम, बिलीव इन कोर कॉम्पिटेंसी। सभी लोगों में क्वालिटीज होती है, सभी लोगों में क्षमता होती है। आप उनके अंदर पावर भर दीजिए, आप उनको एम्पावर कर दीजिए। देखिए आपके लोग आपके लिए कहां से कहां आपको लेके चले जाएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके चले जाएंगे। ईगो इश्यूज, ईगो नहीं होने चाहिए। ईगो एक ऐसी चीज होती है जो हमको आगे बढ़ने से रोकती है। देखिए ईगो, मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं। एक बस रुक गई चलते चलते, 12 लोग नीचे उतरे, सब सवारियों ने देखा कि 12 तगड़े तगड़े लोग नीचे उतरे, बस अभी भी क्यों नहीं चली, तो थोड़ा खड़े होकर उन्होंने देखा जो लोग धक्का उतारने उतरे थे वो कहां गए, तो देखा 6 लोग आगे से धक्का दे रहे हैं, 6 लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं। दैट इज द रियलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन कि आधे लोग पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं, आधे लोगों के ईगो इश्यूज इतने कि वो नेगेटिविटी से काम कर रहे हैं। और यहां पर मैं ये बात कहना चाहूंगा, बस इतनी सी बात समुद्र को खल गई, बस इतनी सी बात समुद्र को खल गई कि कागज की नाव मुझ पर कैसे चल गई। सो दैट इज ईगो। जहां ईगो नहीं होगा वहां जबरदस्त काम होगा, जबरदस्त लीडरशिप होगी। हमेशा याद रखिए, इंडिविजुअल्स विंस द गेम, टीम विंस द चैंपियनशिप। अगर आपको चैंपियनशिप जीतनी है तो अपनी आप टीम बनाइए और फिर देखिए आप कहां से कहां निकल जाते हैं। नेक्स्ट इज जोस मौरिन्हो, सबसे वर्ल्ड के नंबर 1 मैन मैनेजमेंट स्किल्स के पर्सन माने जाते हैं, फुटबॉल के कोच जोस
मॉरिनो, इनको नंबर 1 कोच माना जाता है दुनिया के अंदर। ये पोर्चुगीज से हैं, चेल्सिया यूके के क्लब से इन्होंने कोचिंग देनी शुरू करी। वो लड़खड़ाता था वो क्लब, जब ये गए तो उस क्लब को नंबर 1 पहुंचा दिया। फिर छोड़ के इटली में आए तो इटली को नंबर 1 पहुंचा दिया। फिर चेल्सिया वहीं का वहीं पहुंच गया। उसके बाद स्पेनिश में जब ये, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? Yes, sir. It's very clear. Sir, yes, sir. Now it is audible. इसमें गए, जब ये स्पेनिश में गए तो चेल्सिया और इटली के क्लब्स लड़खड़ाते रहे, स्पेनिश को इन्होंने नंबर 1 लगा दिया। इट मींस what key factor was there? That was this person, man management skills, means teamwork. इन्होंने उन लोगों को बताया कि भैया देखो, तुम लोग ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री से ऊपर नहीं हो। तुम जरूर हीरो हो, लेकिन तुम हीरो तब हो जब तुम सब इकट्ठे हो। इन्होंने इतना बड़ा मैसेज दिया, और यही मैसेज क्रिकेट में गैरी क्रिस्टन ने इंडिया में दिया। वो भी इन्होंने इंडिया को जिताया, क्योंकि इंडिया के सब लोग भी अपने आप को सुपर हीरो समझते थे, लेकिन उन सब सुपर हीरोज की ईगो लेवल को ठीक करके उनको टीम में मिलाया जब, तो उन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया। देखिए, वी नीड टू चेंज माइंडसेट। कि बहुत बार हमने सुना होगा अपनी टीम से, ऐसा ही होता है, यही होता है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, वैसा तो कभी हो ही नहीं सकता। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अक्षय कुमार was waiter in Bangkok, very successful actor. Rajinikanth was bus conductor, very successful actor, जिन्हें साउथ में भगवान का दर्जा दिया गया। MS धोनी was TT in train, इंडियन रेलवेज में TT थे ये। मैरी कॉम को लोग कहते थे कि ये शादी करने के बाद भी कोई खेल सकता है, खेलना तो छोड़ो, जीतना तो बहुत दूर की बात है, कोई खेल भी नहीं सकता। इन्होंने कितनी सारी चैंपियनशिप्स दिखाई। तो यहाँ एक माइंडसेट हमें अपने आप तोड़ने की जरूरत है। तो माइंडसेट हमें हमारी लीडरशिप से हमें रोकता है, कहता है ये नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर n नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो ये कहते हैं नहीं, कुछ भी हो सकता है। कल्चर, ब्यूटीफुल थिंग सेड बाय लुइस वी गार्सनर, एक्स सीईओ ऑफ IBM। इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही। इन्होंने कहा कि अगर चेंज करना है ना, तो देखो क्या चेंज करना है। कल्चर इज नॉट वन फैक्टर ऑफ द गेम। इन्होंने कहा चेंज करना है ना अगर आपको, तो कल्चर चेंज करो। बातों से, प्रेजेंटेशन से, स्लोगन से, पेपर वर्क से कुछ नहीं होगा, डस्टबिन रखने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई उठा के उसमें गंद नहीं डालता, उसको लगता है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन गंदा हो रहा है इस चीज से। कल्चर इज नॉट वन फैक्टर ऑफ द गेम, बट कल्चर इज द गेम। Change the culture as a leader. If you are able to change the culture, you have done everything. You have proven your leadership. That is leadership. Change the culture. Yes. Beautiful thing. Beautiful thing. अगर आप चाहते हैं आपके एम्प्लॉइज सिर्फ हाथों और पैरों से काम ना करें, तो उन्हें खुश रखिए। बिलीव मी, जब आप उनको खुश रखेंगे तो हाथों पैरों से ही काम नहीं करेंगे, वो लोग दिल और दिमाग से भी काम करेंगे। और जब लोग हाथ, पैर, दिल और दिमाग से आपके लिए काम करेंगे, समझ लेना अब कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा होने वाला है। यस, अगेन समथिंग वेरी गुड। एलिफेंट को सबसे बड़ा जानवर कहा जाता है, जिराफ को सबसे ऊंचा जानवर कहा जाता है, लोमड़ी को सबसे चालाक जानवर कहा जाता है, और चीते को सबसे फास्ट दौड़ने वाला जानवर कहा जाता है। जबरदस्त क्वालिटीज है इन लोगों में, लेकिन जंगल का राजा तो कोई और है। इसका मतलब टैग होने से कोई जंगल का राजा नहीं बन जाता। जंगल का राजा तो बनता है शेर। Because lion is courageous, bold, confident, daring, never afraid of anything, and is unstoppable. Bring out your lion spirit and see the lion in you. अपने अंदर आप एक शेर महसूस करेंगे, शेर का व्यक्तित्व, अस्तित्व महसूस करेंगे। और शेर जंगल का राजा होता है, शेर सही मायने में लीडर होता है, और आप किसी भी बड़े लीडर से कम नहीं है। आप, यू आर गोइंग टू रॉक the things in the coming times, क्योंकि आप जिस चीज को समझने आए हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, सिकंदर हालात के आगे झुकता नहीं, सिकंदर हालात के आगे झुकता नहीं, तारा गिरता नहीं। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुद्र में, पर कभी कोई समुद्र किसी दरिया में गिरता नहीं। Thank you very much. God bless you. Be a great leader. Any questions you can ask?
Sir, thank you very much for your wonderful presentation. Thank you, Vasav ji. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thanks for the compliments. Thank you. Knowledge is very. Thank you, Mr. Nelson. Sir, I Thank you want to add for one this more valuable dimension in session. that is the competency mapping. Vikas sir? Yes, I'm listening. Sir, competency mapping also we can. Yeah, my dear, we can see. I am having constraint of time that you know, and I try to make it interactive also at the same time. And definitely there can be few more things. You are absolutely right. It's very empowering, sir, and your presidency admirable. Thank you very much, dear. Thanks a lot. Very interesting lecture, sir. It's very difficult to keep the lecturers or professors engaged, but you have done it very well, sir. Thank you. It was Thank you very very much. interesting and it was very elaborative. Sir. Thanks, Thank madam. Thanks. I tried my best to. Thank you Really so very much, sir. in day-to-day life, it's very useful, sir. That topic is very useful. Yes, especially for we people being in academics, because we are in the public domain and we have to handle, we have to manage, we have to convince a lot of people, and we have to have all these qualities in us. That's why because all the academic positions are dynamic positions and more or less leadership positions also, because as a faculty also you're managing a lot of people under you. So as a dean director also, then again big team is there. So these positions are definitely, and I would like to appreciate and congratulate GKV Faculty of Engineering and Technology, especially Dr. Pankaj Madan, AICT, for choosing this topic specifically for the professors, director, dean, and for the faculty members. So my request, can you repeat that couplet of Sikandar, because when you आपको मुझे लगता है बहुत पसंद आया वो. All of your couplets were amazing. They were very relevant. वैसे मेरे दोस्त नीरज जी, every couplet was remarkable. It was very relevant and apt. Wherever you used it. Thank you नीरज जी. वैसे गोली नीरज जी एक ही बार चलती है. आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं दोबारा पढ़ देता हूँ. सिकंदर हालात के आगे कभी झुकता नहीं, तारा टूट भी जाए जमीन पर गिरता नहीं, अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुद्र में, पर कभी कोई समुद्र किसी दरिया में गिरता नहीं. Is it clear? Big round of claps. Thank you, नीरज जी. Thank you very much. बहुत बढ़िया sir. Your energy level is very high and unparalleled. Very nice. Thank you. वो कहा ना कि पैशन और जोश और जज्बा अगर लीडर में नहीं होगा तो फिर किस में होगा. और बिलीव मी, आप भी एक जबरदस्त लीडर हैं. थोड़ा अपने आप में और विश्वास बढ़ाइए, और आप आज आपको बहुत लीडरशिप की डायमेंशंस के बारे में पता लगा है, और आप ये 5 दिन अगर अटेंड करते हैं तो मुझे लगता है एक से बढ़कर एक लोग यहाँ आने वाले हैं. और हमें सही मायने में थैंक्स करना चाहिए कि मुझे भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला ऑल इंडिया लेवल पर, और सही महीने में जो थैंक्स जाता है वो AICT और GKV का जाता है, पूरी टीम का जाता है. मैं आई थिंक हमें जो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज करना चाहिए वो पूरी टीम के लिए करना चाहिए, कि जो इस शो के पीछे इतना काम कर रही है, स्पेशली डॉक्टर पंकज मदान, ग्रेट लीडर. Yes, sir, agree with you. लेक्चर के बाद जो है ना एनर्जी थोड़ा सा वीकनेस आ जाता, लेकिन आपका लेक्चर सुन के एनर्जी आ गई सर. ग्रेट. और मेरे दोस्त वैसे भी ये कोविड के टाइम पे तो एनर्जी बहुत जरूरी है. बिल्कुल. आप सबने इतना अच्छे से पार्टिसिपेट किया और कॉम्प्लीमेंट किया. आई थिंक मेरे लिए भी ये बहुत, मेरे लिए और मेरा एनर्जी बढ़ाने वाली बात है. और देखिए, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना भी बहुत बड़ी बात है. मैं हैप्पीनेस पे भी बहुत लेक्चर्स देता हूँ, तो लोग थैंक यू और सॉरी जनरली बोलते ही नहीं है, बट आपने इतना कॉम्प्लीमेंट किया, मैं समझता हूँ ये भी आपने बहुत बड़ी बात है.
जो बिकॉज देखिए कोई भी किसी की तारीफ ऐसे नहीं करता, कोई दिल से करता है और कोई उसको अच्छी बात लगती है तभी करता है। और एक दूसरे की तारीफ से हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलती है और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। Thank you, sir. Thank you for this nice session. I hope the participants have really enjoyed it. And as per the responses of the participants, which I have received in the chat, as well as on the live also, that participants are very happy and they are reciprocating their happiness and their to all the participants on the common platform. Thank you, sir. बहुत अच्छी बात है। Session. I really appreciate and thankful to all the participants for the kind gesture. उन्होंने बहुत kind gesture और बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से participate किया. I think they have done their job and they have justified as a participants. Thank you once again. Thank you very much.